Okay, now in this lecture we will discuss about the derivatives of trigonometric functions. So let's start with derivative of my sorry, give me a right around. So this is a derivative of trigonometric functions. So इसके अंदर हम trigonometric functions यानी कि sin, cos, tan इसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक हो गया? So let's start it. Okay. Derivatives of sine and cosine function. ठीक है. साइन, अब साइन का फंक्शन आ जाएगा तो मेरे पास फंक्शन की वही वैल्यू लगेगी, दैट इज एक्स प्लस एच माइनस एफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, एंड देन इट मूव्स टुवर्ड्स द एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच. तो यहाँ अगर मेरे पास साइन होगा और मेरे पास एच की वैल्यू लेटर से 0.1 है, सो 0.01 है, तो सिंपली 0.01 डाल देंगे एच की वैल्यू माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 0.01. Okay, so after this ये मैं erase कर दूँ, then we will uh, move towards the next slide, that is this one. Okay, अब मेरे पास अगर साइन का डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ साइन आपने जो याद रखनी है चीज पर ये रखनी है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इक्वल्स टू cos x, डेरिवेटिव ऑफ साइन x इक्वल्स टू cos x, एंड डेरिवेटिव ऑफ cos x इक्वल्स टू माइनस साइन. ये दो बेसिक फार्मूलाज हैं रिगार्डिंग मेरे साइन और कोसाइन कॉस के डेरिवेटिव. ये बेसिकली एक प्रूफ है कि हाउ वी प्रूफ इट. सो यस, इसी तरह सेम साइन एक्स प्लस एच करके हम बेसिकली अब साइन एक्स प्लस एच करके अगर आप कहते हैं सारी कैसे प्रूव किया जाता है, दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स किस तरह बराबर होता है. तो मुझे पता है लिमिट एच विद द साइन एक्स प्लस एच डिवाइडेड माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एच. अब साइन एक्स प्लस एच यानी कि ए प्लस बी, ये मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसका फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. ये मेरे पास कंप्लीट फार्मूला है साइन अल्फा प्लस बीटा, दैट इज साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा. अब इसके बाद यहाँ पे मेरे पास है एक्स प्लस एच, तो मेरे पास क्या हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस दिस. ठीक हो गया. अब हमने क्या करना है इसमें, साइन साइन वाली टर्म अलग कर देनी, यानी कि ये साइन की टर्म है और ये वाली साइन की टर्म है. ठीक है, साइन एक्स वाली टर्म, साइन एक्स और साइन एक्स की टर्म अलग कर दी और ये टर्म अलग कर दी. यहाँ से साइन एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा कॉस एच माइनस वन डिवाइडेड बाई एच. ओके, प्लस कॉस एक्स साइन एच डिवाइडेड बाई एच, दिस इज द वन. अब साइन मेरे पास अगर मैं साइन की वैल्यू लिमिट फंक्शन यहाँ पे अप्लाई करता हूँ विद एच इक्वल्स टू जीरो, तो मेरे पास आंसर जीरो आ जाएगा इस सिस्टम में विद साइन एक्स. ठीक है, तो साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय जीरो विल बी जीरो. अब कॉस एक्स विद क्या हो जाएगा साइन जीरो डिवाइडेड बाय जीरो. ये बेसिकली मेरे पास एक थ्योरम होता है जिसे हम कहते हैं सैंडविच थ्योरम. कहते हैं सैंडविच थ्योरम. सैंडविच थ्योरम ये कहता है कि अगर मेरे पास लिमिट है, लिमिट किसी की भी, लेट से x अप्रोचेस टू जीरो, सो साइन x डिवाइडेड बाय x, इसकी वैल्यू हमेशा वन होगी. ठीक है, अब इस केस में क्या है, h है सिर्फ, और इस इधर मेरे पास वेरिएबल चेंज, बट आंसर मस्ट बी सेम, सो इट्स वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू जीरो. So again, the reason is according to sandwich theorem. Okay, so this is the theorem of limits, जिसमें जो कहता है कि अगर मेरे पास लिमिट है जो किसी भी वेरिएबल x हो गया h हो गया जो अप्रोच करता है जीरो पे, तो उसका रेशियो साइन का डिवाइडेड बाय उस वेरिएबल का इट मस्ट बी इक्वल्स टू वन.
तो उसके बाद हमने क्या करना है, cos x को मल्टीप्लाई कर देना है 1 के साथ, और फिर उसके बाद इट विल बी डेरिवेटिव विल बी इक्वल्स टू derivative of sin x equals to cos x. Okay, this is the relationship between the two variables. First is my sine and cos. So first, when I take the derivative of my function, as my function is sine x, so sine x का जो graph, it implies that this is the sine x graph. This is known as sinusoidal curve, which starts from 0, coincide again at 180, that is pi, and again coincide at 0 at 2 pi. ओके, सो ये मेरे पास किसका है, ये एफ ऑफ एक्स दैट इज साइन का है। अब मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, कॉस एक्स का। तो कॉस एक्स का जो मेरे पास ग्राफ बनेगा वो हमेशा ऐसे बनता है। अब पूछे सर व्हाई इट इज हैपन, क्यों ऐसा बनता है। अब कॉस एक्स की जगह यही ये एक्स एक्स यानी कि इस एक्स वैल्यू 1 0, तो मेरे पास इस कॉस एक्स का जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 1 आ रही है। तो कॉस एक्स है, कॉस की एक्स की जगह 0 डालें तो कॉस एक्स की वैल्यू आती है 1। So this means that this at 0 my graph as this. In case of sine, अगर इसकी बात करते हैं तो sine 0 will be my 0. So at 0 my sine graph will start from this point. I have to change the color, just a minute. My sine graph will be started from this, but my cos graph will start from this because cos 0 equals to 1 and sine 0 equals to 0. Okay. Differentiate so okay, differentiate a function containing x, basically x sine, or it is basically sine x square. Okay, so how to differentiate it? So the formula for this one is f of x equals to 5x cube sine of x. अब आपने कैसे इसे करना है, this will be written as function that is f of x. First, my question is f of x equals to what? It will be equals to 5x cube sine x. First, I have to realize that how many variables are in my equation. So this is the first one and this is the second one. So I have two variables, both are multiplying with each other. So I will apply product rule. So my formula will be applied as derivative of first, that is d upon dx, of first variable, that is 5x cube, second as it is, plus first as it is 5x cube, derivative of first. Okay, so this is the function that derivative equals to this one. अब derivative है 5x cube का, so it will be 5 बाहर आ जाएगा and x cube will be 3x square into sine x plus second क्या 5x cube. अब मेरे पास है derivative of sine x, sine x derivative equals to cos x. So this is the answer of my problem, that f of x equals to. Okay, अब मेरे पास second जो है, second question है मेरे पास, second question is this one, जिसके अंदर मैं अप्लाई कर रहा हूँ g of x equals to cos x divided by 4x. So ये यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा my quotient rule. So it will be applied like it will be divided first, so denominator का square, then denominator उसी तरह, then I have to differentiate my numerator d upon dx of cos of x minus numerator उसी तरह with derivative of
the second, that is my denominator. Okay, so it will be 4x square. Okay, अब इसके बाद क्या है? This will be like derivative of cos x. Derivative of cos x equals to minus sin x. Then again a minus cos x. The derivative of 4x square will be, that 4 will be before my derivative, then it will be 2 of x. Okay, so at denominator it will be equals to 16x4 because it is the 4x square. The square of 4x square. So it will be like minus 4x square sin x. Plus I have to multiply 4 with this, so it will be 8x, and then I have to multiply with cos x, so 8x cos x whole divided by 16x to power 4. Okay. अब इसके बाद हमें क्या करना है? We have to इसे सिंप्लीफाई करने के लिए अगर मैं 4 कॉमन लेता हूँ, 4x, देखिए 4 और x कॉमन लेता हूँ यहाँ से, so it will be 4x will be common, so it will be minus x sin x with minus 2 cos of x whole divided by 16x4. So this 4 will be divided here, so it will be 4, then x with this one, so it will be minus x sin x minus 2 cos x divided by 4x cubed. So this is the answer of my this is the answer. Okay, so okay, an application to velocity. Let us say that my function is 2 cos t minus 1. So how to solve it? So simply it will be solved like that. The problem is a particle moves along a coordinate axis in such a way that the position at a time is given at, this is the position vector. ये मेरे पास क्या है? Position with respect to time given है, जो कि function की shape में है, that is s of t equals to 2 sin t minus t for this interval. Okay, so at what time the particle at rest, आपने बताना है किस टाइम पे जो है वो रेस्ट पे रहेगा. To determine when the particle is at rest, to take the derivative which is equals to velocity and equate it equals to 0. So सबसे पहले मैंने इसका derivative लेना है. So derivative will be what? 2 constant है and sin का derivative होगा cos of t, और t का derivative with respect to t हो जाएगा -1. So this is the derivative of my st. Okay, so st will be like this one. और उसके बाद हमने इसमें 2-3 वैल्यूज पुट करनी है. वो कैसे पुट करेंगे? वो मेरे पास जो इंटरवल गिवन है फ्रॉम 0 टू दिस वन 2 पाई, दैट इज 0 to 360 डिग्री. सो यहाँ पे आफ्टर अप्लाइंग द सॉल्यूशंस टू दिस सॉल्यूशंस टू दिस इक्वेशन आर, इस सॉल्यूशन जो है इस इक्वेशन की बेसिकली t equals to pi upon 3. pi upon 3 is 60 डिग्री. जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कैसे? 2 cos 60 डिग्री. So 2 cos, just give me 1 second. 2 cos 60 degree minus 1. So it will be 2 into
cos 60 you have to find the value. Okay, give me 1 second, मैं calculator पे find कर लूँ. So this value equals to 0.5. 0.5 minus 1. So this will be 1 minus 1, answer will be 0. So मेरे पास आंसर 0 तब आएगा जब मेरी t की वैल्यू कितनी होगी, pi by 30, that is 60 degree. Second is 5 pi by 30. What does this mean? This means that 60 multiplied by 5, that is 300. At 300 this value equals to 0. तो मेरे पास functions के अंदर 300 और 60 पे जो है मेरी वैल्यू जो है 0 आ रही है. ठीक हो गया. Okay. The derivative of tangent function. So tangent function मेरे पास कैसे होते हैं? So okay. Now if we derive f of x equals to tan of x. तो सबसे पहले हमने क्या करना है इसमें? As we know that tan x equals to sin x divided by cos x. This is the function which is basically quotient, which will apply quotient rule. हम इस पे quotient rule apply करके इसको solve कर लेंगे. So this will be solved like f of x will be denominator square, so it will be cos x square. Then the value of denominator as it is, so it will be cos x. So it's cos x. Then differential of my denominator, that is d upon dx of sin x. Minus denominator as it is, so it will be sin x. And then the differential of my denominator, that is d of df of d of dx of cos x. So it will be cos x into the, what is the derivative of sin x? Sin x derivative is cos x minus, then it is sin x as it is. Then the differential of cos x will be equals to minus sin x divided by cos square x. So it will be written as cos square x minus minus will be plus, so it will be plus sin square x divided by cos square x. As we know that the cos square x plus sin square x equals to 1, so I will employ this trigonometric rule here. So it will be cos square plus cos square x plus sin square x will be equals to 1. So 1 upon cos square x. So 1 upon cos square x, as 1 upon cos is equals to secant. So it will be secant, and there is a square, so it will be equals to secant square x. So this is the derivation of, when I derive tan x, so the after derivation the tan x will be equals to, the derivation of tan x will be equals to secant square x. Okay, so these are 4 multiple formulas in the trigonometry which are variantly used. So first is the differential of my tan x will be equals to secant square x, then cot x, which will be minus cosecant square x, secant x will be secant x tan x, then cosecant x will be minus cosecant x cot x. So you have to remember it in order to solve these questions. Okay. Find the equation of a line. As the equation of line given as f of x equals to cot x. So f of x equals to cot x at x equals to pi upon 4. So function will be pi upon 4, so it will be cot pi upon 4, which will be equals to 1.
Pi upon 4 will be 180 divided by 4. It will be equals to 45 degree. So cos 45 degree equals to 1. Okay, then I have to differentiate with cot x as cot x equals to minus cosecant square x. So minus cosecant square pi upon 4, that minus cosecant square pi upon 4 means 45. This value equals to negative of 2. So as this is differential, so it is dy upon dx, which will be equals to the slope m. So my value will be written as y minus y1 m x minus x1. So it will be y. What is the first value? First value is 1. So my y value equals to 1. So as this value basically, when I employ the value of x in this fx equals to cot of x. So f x equals to y. Okay, so this y equals to 1 as I apply cot of 45 degree. So this is the value of y. So it will be y minus 1 equals to m is minus 2, then x minus x1. So x1 value will be what? X1 value is given pi upon 4. So I have to put this. So it will be pi upon 4. Then I have to elaborate it. So it will be y equals to minus 2x plus 1 plus pi upon 4. So this is the value of y for a given tangent graph line. And this is basically the equation of line. So this is the end of today's lecture. We'll see you in the next lecture.